दोस्तों अभी हम इस बॉक्स में वायरिंग करेंगे। ये एक इनक्यूबेटर का बॉक्स है और इंशाल्लाह पूरी वीडियो में बनाऊंगा। दोस्तों आप सबसे पहले आप लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी एक वायर है जो कि 12 वोल्ट के लिए, जिसको फ्लेक्सिबल वायर भी बोलते हैं और जो कि 12 वोल्ट के लिए इस्तेमाल होता है। और दूसरा आपको एक कटर की ज़रूरत पड़ेगी और एक पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों वायरिंग में हम इसको कनेक्ट करेंगे सर्किट के साथ, जो लीड सोर्स है, और दूसरा ये सर्किट जो है ये पुल इसमें फिट करेंगे। यानी इसकी जो वायरिंग है वो भी हम करने वाले हैं, आप लोग देखें। दोस्तों मैंने 2 कार्टन जो है वो एक साथ जो है दोनों जोड़ लिए हैं। ये डबल कार्टन है तो इसलिए हम जो वायरिंग करेंगे स्पेस है उसके अंदर वायर आएंगे, तो जो वायर है वो नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पे वो सर्किट लगेगा। इसके अलावा आपको इस बिल्डिंग वायर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके ज़रिए आप इस सर्किट को जो है इस कार्टन के साथ बांध लेंगे और ताकि इधर उधर ना हिले। जिस जगह पे हम सर्किट लगा रहे हैं वहाँ पे हम इस बिल्डिंग वायर को इससे गुजारेंगे, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा टेप लगा रहे ताकि ये ख़राब होने से बच जाए। ये जो गत्ता है ये ख़राब हो जाता है अक्सर बिल्डिंग वायर से। यहाँ पे सर्किट लगेगा और इसकी जो वायरिंग है वो इस दूसरे कार्टन के अंदर जो स्पेस है इसमें वो वायरिंग जाएगी। यहाँ से हम 2 वायर गुजारेंगे, यानी 4 वायर गुजारेंगे। 2 वायर जो है ये हीट सोर्स के लिए होगा और दूसरा वाला गियर मोटर के लिए होगा।
इसमें आप लोगों ने चेक कर देना है कि कौन सा नॉर्मली ओपन है और कौन सा नॉर्मली क्लोज है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मली ओपन है वहाँ पे आप लोगों ने इन वायर्स को कनेक्ट करना है। आप देख लें अभी ये नॉर्मली ओपन है और ये नॉर्मली क्लोज है। यहाँ से आप लोगों ने मीटर कनेक्टिविटी पे सेट करना है और ये चेक कर देना है।